जोहार, नमस्कार। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, रेलवे बोर्ड के सदस्य एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी एवं भारतीय रेलवे 2019 बैच के साथी प्रशिक्षु अधिकारी, मैं निकिता अग्रवाल, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की अधिकारी, इस सम्मानित सभा में आप सभी का अभिनंदन करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जब आज भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक के समक्ष हमें भारतीय रेलवे प्रशिक्षण का अनुभव साझा करने का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है। अनुभवों की श्रृंखला प्रस्तुत करने के पूर्व मैं भारतीय रेलवे परिवार की अहम सदस्य मिस अंजलि गोयल, मेंबर फाइनेंस, रेलवे बोर्ड से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे मंच पे आएँ एवं स्वागत वचन प्रस्तुत करें। Honorable Madam President, on behalf of the railway officers gathered here today, I thank you for your kind consent to address our young probationers. Madam President, your rich life experiences and wisdom are a source of inspiration for us. The young officers will greatly benefit from your guidance and advice at this stage of their career. Your empathy and sensitivity on social issues is well known. This would be a guiding light in all our endeavors while serving our passengers and freight customers. Madam President, Bharatiya Rail is dedicated to public service. We run economically priced commuter services, sleeper services, and unreserved services to meet the travel needs of our working classes, farmers, and economically weaker sections. Special trains are run to ensure adequate transport services during the harvest seasons and festivals for migrant workers. The One Station, One Product scheme of Bharatiya Rail promotes the vocal for local vision of the government. Products of our local artisans have been showcased at more than 900 stations across the country. This has contributed to a significant increase in income of several thousand direct beneficiaries. Honorable Madam President, security of women and children on trains and stations is a prime concern. Several initiatives like CCTV monitoring and all women RPF squads seek to provide end-to-end holistic security for women and children during travel. Madam President, it is our endeavor to constantly improve and upgrade facilities for our passengers and make every journey memorable. In this direction, the country-wide program for station upgradation, the Amrit Bharat Station Scheme, will provide better signage, escalators and ramps for the aged and differently abled, clean toilets and waiting rooms, organized entry and exit and public transport at our stations, and several other facilities. At present, 1,309 stations are being covered in a phased manner. Amrit Bharat stations have been planned as new city centers. Honorable Madam President, Railways production units manufacture about 1,000 electric locomotives and 6,000 coaching stock annually, contributing directly to the manufacturing GDP of the country as foot soldiers of Atmanirbhar Bharat. Vande Bharat trains are a shining example of in-house technological upgradation by Bharatiya Rail. Madam President, these are just a few glimpses of work being done by the Bharatiya Rail. These young officers gathered here today are keen to hear your words of wisdom. Your enlightened advice would inspire and enthuse them to contribute towards Viksit Bharat with empathy and humaneness. Honorable Madam President, I once again thank you for giving us your valuable time today. धन्यवाद महोदया। फिलोसोफर लाओ ज़ू ने कहा था, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। भारतीय रेलवे की सेवा में हमारे लिए वो कदम था भारतीय रेलवे का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण यात्रा हमारी सेवा का वह बहुमूल्य समय होता है जब इस विशाल संगठन की विभिन्न सेवाओं और उनके कर्तव्यों एवं कार्य प्रणालियों की अनुभूति करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इस विशिष्ट अवसर पर हमारे कुछ साथियों ने अपने प्रशिक्षण अनुभवों एवं अनुभूतियों को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री शशांक शेखर, भारतीय रेलवे सिग्नल अभियांत्रिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी से कि वे आएँ एवं अपनी प्रशिक्षण यात्रा से हमें साझा कराएं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं समस्त महानुभावगण, मेरा संबंध भगवान महावीर की जन्मस्थली एवं भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही वैशाली जिले से है।
एशिया के प्राचीनतम गणतंत्र के एक छोटे से गांव के निवासी के लिए विश्व के विशालतम गणतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष खड़ा होना एक गौरव का विषय है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारी प्रशिक्षण भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी बड़ौदा में शुरू हुई। कोरोना काल होने के कारण प्रशिक्षण की शुरुआत क्वारंटीन में रहते हुए ऑनलाइन माध्यम में हुई। कहते हैं प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति, अर्थ है प्रातः काल उठने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। अकादमी में क्वारंटीन खत्म होते ही प्रातः काल में योगा एवं पीटी की व्यवस्था कराई गई। अकादमी में विभिन्न विभागों की बुनियादी जानकारी, श्रम कानूनों की जानकारी, हमारे विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की जानकारी दी गई। भारतीय रेल की सफलता में अंतर विभागीय सामंजस्य का बड़ा योगदान रहा है। अकादमी में विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतिस्पर्धाओं एवं गतिविधियों की मदद से विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षुओं के बीच सामंजस्य की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारी तकनीकी प्रशिक्षण इडसेट सिकंदराबाद में हुई। भारत में विकसित कवच की भी प्रशिक्षण हुई। आज कवच सुरक्षित यात्रा का दूसरा नाम बन चुका है। इसे 100% ट्रेनों में लगाई जाएगी। भारतीय रेल की क्षमता एवं सुरक्षा बढ़ाने के लिए बने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की भी जानकारी दी गई। वर्तमान दशक में विगत दशक की तुलना में 3 गुना से ज़्यादा स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाई गई है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमें फील्ड ट्रेनिंग में भेजा गया। इस दौरान मैं सोनपुर मंडल में क्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे रेलवे लाइन दोहरीकरण के कार्य में शामिल हुआ। माल ढोने के लिए बन रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी काम किया। वहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यों की बारीकियों को समझा। इससे मुझे अपने उत्तरदायित्वों का एहसास हुआ। प्रशिक्षण के दौरान हमें तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन, माउंट आबू में ट्रैकिंग एवं बड़ोदरा में हाफ मैराथन में भाग लेने का मौका मिला। इन सब क्रियाओं ने हमारे मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए नई ऊर्जा का संचार किया। आदरणीय राष्ट्रपति जी, 1.5 वर्षों के प्रशिक्षण के उपरांत मैं रेल सेवा के लिए उत्सुक एवं प्रेरित महसूस करता हूं। सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी होने के नाते इस अमृत काल में रेल एवं रेल यात्रियों को सुरक्षित एवं सही समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हूं। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुनर्दीप सिंह को, जो अपने प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा करेंगे। Honorable President of India, dignitaries, officers of Indian Railways, and my fellow probationers, a very good morning to all. Reminiscing about the journey in Indian Railways, I still think of the first week of our training where I got the opportunity to interact with the then respected CRB and CEO Railway Board, where I asked the question, "Sir, what are the 3 qualities to achieve excellence and heights of success in Indian Railways?" Feeling elated about the question, he answered, "First, you should always strive to do hard work. Think out of the box. Secondly, step out of your comfort zone. You should be ready to work anywhere, anytime, and for anything. That is the meaning of true service to the nation." As Guru Nanak Dev Ji has also taught us, Naam Jap, Kirat Kar, Te Vand Ke Chak. That means service to the nation while living in the society. And thirdly, your section of control should be your canvas. Try to paint the Picasso finesse into it using latest technology and infrastructure. Honorable President, our field visits to production units, workshops, maintenance depots, railways divisions, and control centers strengthen the fundamental classroom and online training sessions with practical experience of the working of Indian Railways and day-to-day operations. We witnessed indigenously developed systems like Kavach, artificial intelligence, big data analytics, and predictive maintenance, which are providing an ever-increasing thrust to safety, reliability, and punctuality. As our Honorable Prime Minister has time and again told, Indian Railways will become the growth engine of nation's Vikas Yatra. It will be apt and essential to quote our Honorable Prime Minister here, देश को गति मिलेगी तो रेल से मिलेगी, देश को प्रगति मिलेगी तो भी रेल से मिलेगी. This we could see visibly in the rolling out of 33 indigenously developed Vande Bharat trains, Vistadome coaches achieving more than 100 kmph average speed in dedicated freight corridors, and state-of-the-art redevelopment of stations capturing the amalgamation of world-class facilities and our rich heritage. Honorable President, we assure you that given huge resources at our disposal, numerous opportunities, infrastructure, and using latest technology and Industry 4.0, we will strive hard to achieve our goals, the biggest being service to the nation. We will move ahead and realize our potential to become catalyst for India's transformation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Now, I will invite Dr. Pradeep Dubal to share his training experience. परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्य तथा मेरे सहपाठी अधिकारीगण, मैं डॉक्टर प्रदीप डुबल
महाराष्ट्र के सांगली जिले के बांबवडे नामक एक छोटे से गांव के किसान परिवार से आता हूं। मैं भारतीय रेल यातायात सेवा के 2019 बैच का परिवीक्षाधीन अधिकारी हूं और वर्तमान में मैं पूर्व तट रेलवे के वाल्तेरू मार्शलिंग यार्ड में सहायक क्षेत्रीय रेल प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं। 2.5 साल पहले जब मैं सेवा में सम्मिलित हुआ, तब से लेकर आज तक मैंने हर दिन वैयक्तिक रूप से अपने आप में वृद्धि महसूस की है। प्रारंभिक 18 महीनों का प्रशिक्षण एवं गत 1 साल के प्रत्यक्ष कार्यानुभवोपरांत मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमारा प्रशिक्षण एक उचित, बहुत विचारपूर्वक एवं सही ढंग से डिजाइन किया गया था। प्रशिक्षण की शुरुआत से लेकर अंत तक हमें इस विशाल भारत देश के हर प्रदेश से वहां की रेल गतिविधियों से परिचित कराया गया। विविध भौगोलिक चुनौतियों में रेल परिचालन कैसे किया जाता है, वहां की परिचालन में सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाता है, यह हमने समझा। रेलवे द्वारा परिवहन की जाने वाली वस्तुएं एवं इस परिवहन का आर्थिक गतिविधियों में महत्व जाना। इसके साथ ही देश की विविधता से आभूषित भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और इस विशाल देश को एक धागे में पिरोए रखने में भारतीय रेल का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी अनुभूति हुई। सम्मानीय महोदया, बचपन में हाफ टिकट से लेकर आज ड्यूटी पास पर रेल यात्रा करने का मेरा सफर मुझे अत्यंत रोमांचपूर्ण लगता है और आज मैं अपने आप को अंदर से बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे रेल परिवार का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 170 सालों के इतिहास में भारतीय रेल कई बदलावों से गुजरी है, परंतु कोई चीज अभी तक नहीं बदली है तो वो है भारतीय रेल का लोकाभिमुख स्वरूप एवं देश की अर्थव्यवस्था में रेल का अनन्य साधारण महत्व। सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया, मैं अपने सहपाठी अधिकारियों की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय रेल की इस भूमिका को बनाए रखने एवं उसकी वृद्धि में हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ निभाएंगे। हम आपको वचन देते हैं कि हम अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों के प्रति सदैव कटिबद्ध रहेंगे और रेल परिवार में सेवा का जो स्वर्णिम अवसर हमें मिला है, उसको पूरी शक्ति एवं क्षमता के साथ निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इसके पश्चात मैं वैष्णवी वेलुस्वामी को यहां पर आमंत्रित करता हूं कि वो यहां पर आए और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। Honorable President of India, esteemed dignitaries and my fellow officers, Namaskar. I am Vaishnavi Velusamy, an officer from the Indian Railway Service of Signal Engineers batch of 2019. I hail from Bengaluru, Karnataka. I would like to express my profound gratitude to the Honorable President for this opportunity to share on behalf of the officers of IRSSE some vignettes from our training. On the 12th of October 2020, we embarked on the journey of a lifetime at the prestigious National Academy of Indian Railways, Vadodara. In the foundation course, which saw the confluence of officer trainees from different regions, cultures and languages, united in the common desire to be a part of India's growth story. At the Indian Railway Service, Signal Engineering and Telecommunications, Secunderabad, we imbibed across phases 1 and 2, cutting-edge signaling and telecommunication technologies through an accelerated medley of classroom and field sessions under the able guidance of experienced faculty. Our training was designed to initiate us to the vision of Indian Railways and develop a sense of esprit de corps. It was a crucible where we forged friendships and celebrated comradeship, breaking down silos across departments, strengthening us as one with the singular aim of taking our great nation forward. We then set off on the coveted Bharat Darshan, in which we travelled and footplated across the length and breadth of our country, witnessing echelon projects like the Chena Bridge in the Northern Railway and the historic Pamban Bridge in the Southern Railway, the Lekhapani station in the eastern reaches of the Northeast Frontier Railways to the busy Churchgate station of the Western Railways, grasping the nuances in the signaling and telecommunication technologies and practices across different zones, while understanding the extent of the role played by the 68,000 route kilometers in connecting the lives of our countrymen across regions, cultures and languages to a point where we're all just a train journey away. In the process, Madam President, we saw why the Indian Railways is called the lifeline of the nation. On this occasion, I would like to quote a verse from the Bhagavad Gita.
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् माते संगोस्त्व कर्मणि. Honorable President, as we stand before you in these hallowed halls, we pledge our lives to the service of this great nation and shall strive to uphold in our roles utmost integrity, dedication and commitment. Jai Hind, Jai Bharat. आज की इस ऐतिहासिक सभा में वो क्षण आ चुका है जिसका हम सभी को इंतज़ार है. अब मैं राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से भारतीय रेलवे 2019 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रेरित करें एवं उनका मार्गदर्शन करें. Dear probationers of various services of Indian Railways, I welcome you all to Rashtrapati Bhavan. Only yesterday, I had met young and bright officials of your senior batches in the same auditorium. It gives me immense pleasure when I see young officials like you who have dreams in their eyes for the country and people. Hence, I congratulate you for your selection in various administrative, accounts, security and engineering services of Indian Railways. I am sure that you will contribute your best in serving the nation and the fellow citizens. I have been listening to your training experiences for the past 2 years and found them extremely useful to prepare yourself as responsible officers. As you all know, that the technological changes are taking place at an unprecedented speed and scale. I expect you to work collectively and make Indian Railways a future-ready organization. Dear officers, unlike any commercial organization, the Indian Railways is a social lifeline of the country. At the risk of repeating myself, I will say again that it carries the dreams of ordinary people. At the same time, its nationwide connectivity showcases nation's diversity. I am happy to know that the Indian Railways is taking major initiative to promote tourism in the country. Right from the luxury trains to the Tirtha Darshan trains and Bharat Gaurav trains, the Indian Railways has been upgrading the services to provide memorable experiences to the people and to offer glimpses of diverse Indian culture to the Indians and to the visitors from abroad. I would like to share that the trains and their journeys have always been an important part of people's lives. From local trains to long-distance trains, every train journey creates and witnesses countless stories. Being a very important part of such an establishment which has a strong impact on public life, you must understand that the nation and the people have huge expectations from you. You are capable enough to deal with a range of challenges as diverse as building the world's highest bridges to ensuring hygienic and delicious food and clean toilets to the travelers. Dear young officers, you have come to long way from the days of steam-propelled engines. The Indian Railways is day by day getting more fuel efficient and adopting innovative and environment-friendly solutions too. The railway infrastructure development gives a big boost to the country's socio-economic growth and development. The redevelopment of railway stations under Amrit Bharat Station scheme using green technology and adding world-class amenities is a great people-centric initiative that will provide strong push to tourism activities and economic progress. I am confident that all the bright young officers present here today will play a productive role in the making of modernized green Indian Railways and the building of a developed nation. You are all going to be the foundations of the robust transportation system of the country. Therefore, it is important that you acquire the required skills, knowledge, and expertise in transport ecosystem as a whole. You should study and adopt the best practices from within the country and those from other countries too. The country needs efficient multimodal transport system
for which rail, road, air and water transportations should be dealt with a holistic approach and not in isolation. I urge you all to work in coordination with the officers of other departments also for achieving the goal of an Atmanirbhar and developed nation. I would also like to emphasize that you should strive to work efficiently and persistently against all odds to achieve personal and professional goals, and to be ready to face challenging situations if you want to succeed in life. Whether you are an individual or part of a group or organization, when you face the challenges and overcome them, you emerge stronger than ever. In the end, I would like to extend my best wishes for your future endeavor. May you make the country proud. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.